Everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Ritik Duggar. I have completed my MBBS from Grand Government Medical College, and currently I'm pursuing my DNB medicine residency. So in this video, I'm going to talk about grand tests, which we also call GTs, and hopefully that will help you to prepare better. And I'll share my mistakes so that you do not make the same mistake that I did, and also score better in your GTs and eventually even better in your NEET PG. So when should one start giving GTs? So mostly I've seen people say कि एक बार फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जीटी देना स्टार्ट करेंगे. सो माय ऑटोमेटिक क्वेश्चन इज, अगर आप सब्जेक्ट कंप्लीट किए बिना जीटी दोगे तो क्या इशू है? तो मोस्ट ऑफ देम रिप्लाई कि मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि हमने सब कुछ कवर नहीं किया है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग जीटीज? एंड अगर मार्क्स नहीं आएंगे विच विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेसिंग एट द सेम टाइम. सो आई थिंक सो you should be mentally prepared that initial 5 to 6 GTs you are given for the preparation purpose, and later the rest of the GTs you are giving for evaluation purpose. तो अगर आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि आप इसको लर्निंग के लिए दे रहे हैं, so ऑटोमेटिकली आप स्कोर से अफेक्ट नहीं होंगे. Why I am saying this, you should give GT even if you have not completed your first reading, because first reading आपके allocated time for preparation से maximum time लेता है. And the fact is, if you complete reading all the 19 subjects, at the end of your first reading, you don't have much confidence because the syllabus is so vast. By the time you finish 19 subject, आपको first subjects के बारे में शायद ही कुछ थोड़ा बहुत याद रह जाता है. And आपका majority of time चला भी गया उस first reading में, and आपके पास output significant नहीं है. Also, during your first reading, you don't know which topics are important, which topics you are supposed to read superficially, which topic you are supposed to read in very depth and details. There are facts which are very, very important to memorize. There are facts which are important to memorize. And also there are some facts which you don't have to memorize, so you don't end up wasting your time. So जब आप GTs देंगे अपने फर्स्ट रीडिंग के साथ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है. You will remember the mistakes you made and how you understood it while reviewing. So you will come across topics which are repeated quite often. You will be able to mark or highlight important points in your notes. Yeah, so at the end of your first read, you will have a certain output. Like, you will have certain confidence कि हाँ इस तरीके से करना है, and ये यहाँ पर मुझे ज़्यादा ज़रूरत है वर्क करने की, यहाँ पर कम ज़रूरत है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. Oh, these topics are not important because ये तो किसी भी GT में नहीं आया, ये तो बिल्कुल important नहीं है. So you will have an idea. So I did this mistake. I did not give GTs initially. So please do not repeat the same mistake. Though I had separate reasons for not giving GTs initially because I took a break because of my health issue. Second important point is GT is not directly related to your NEET score. So please don't let your GT score fool you. So anyway, I started preparing late, so I did not have much confidence in my preparation. And on top of that, I was getting around 120 to 130 questions correct. While in the same GT, toppers were getting 170 to 180 questions correct. So it affected my confidence. I was like, इस साल तो ऐसे भी selection नहीं होना है. So let's just give exam properly so that next year काम आएगा. That was my approach initially. But retrospectively, I regret, and I think that if I would have not compared my scores to other, and rather just have focused on my preparation with the intention and confidence that yeah, I can do it this year itself, then because in the last few months I was just going with the flow, let's just give the exam and see how it goes. Like if I would have that confidence कि मैं इस साल कर सकता हूँ, I would have probably pushed myself much harder in the last few months and probably would have scored better. So don't let this GT score take away your confidence, because ऐसा नहीं है कि GT में आपके कम आ रहे हैं तो जरूरी है मेन एग्जाम में भी आपके कम आएंगे, या फिर जरूरी भी नहीं है वैसे वैसा कि आपके GT में ज़्यादा आ रहे हैं तो मेन एग्जाम में भी ज़्यादा आएंगे. एंड इसमें एक बहुत बड़ा बायस होता है कि इफ़ यू आर समवन, let's say for example you have prepared your notes from Marrow, you have solved question banks from Marrow, and you are giving GT on Marrow, likely that you will get more question correct if you are giving GT on Marrow app, because कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर रिपीट नहीं भी होते हैं, तो वो कॉमन टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाया जाता है जो कि उस प्लेटफॉर्म के बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पता है. ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपकी GT में नंबर नहीं आ रहे तो मेन एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेन एग्जाम में मेजर पोर्शन बेसिक क्वेश्चंस का होता है, while GT में वो नए क्वेश्चन देते हैं जस्ट टू प्रिपेयर यू. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न टू एनालाइज योर स्कोर.
And what mistake I used to do is like I used to focus on my weakest subject for the next test. फॉर एग्जाम्पल जब आप जीटी देते हो और उसको सबमिट कर जब उसके स्कोर आते हैं तो दे मेक अ लिस्ट कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है. सो अगर मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट डमैट था इस टेस्ट में, सो नेक्स्ट टेस्ट के पहले मैं उसको रिवाइज करूंगा. सो दैट वाज नॉट अ गुड टेक्निक, बिकॉज ऐसे भी जो सब्जेक्ट्स जिनका हायर वेटेज है वो आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं होंगे. व्हाट आई मीन टू से इज दैट फॉर एग्जांपल देयर आर 2 क्वेश्चंस इन साइकियाट्री बीइंग आस्क्ड. आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक गलत किया, तो आपका करेक्ट परसेंटेज है 50%. Whereas let's say मेडिसिन में 20 क्वेश्चंस हैं, आपने 11 करेक्ट किया एंड 9 गलत हुए, so the correct percentage is 55%. So technically मेडिसिन में आपका परसेंटेज ज्यादा है, but it does not mean that you need to read psychiatry. What you do need to prepare is medicine well, because यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है, वहां पर आपके एक ही क्वेश्चन का लॉस हो रहा है. So the thing is that it is very important to make those subjects your strongest which have very high weightage, because let's say आपका psychiatry बहुत strong है, but anyway psychiatry से 2 क्वेश्चन आएगा एंड एक तो मेरे ख्याल से सब कर ही लेंगे जिनका जनरल प्रिपरेशन है, और जिनका अच्छा प्रिपरेशन है उसमें से मोस्टली 2 के 2 काफी लोग सही करेंगे. So that will not give you advantage despite the fact कि psychiatry आपको बहुत strong था. On the other hand, if your subjects like medicine or OBGY is strong, so there are likely probability that अगर 20 क्वेश्चंस में आप 18 to 19 करेक्ट कर पाओगे, सो उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा ओवर एन एवरेज प्रिपरेशन. फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट गेटिंग गुड स्कोर इन OBGY इवन आफ्टर फिनिशिंग माय नोट्स, सो आई डिसाइडेड टू गिव अ लॉट मोर टाइम टू OBGY बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. आई नो इफ आई गिव अ लॉट मोर टाइम टू OBGY आई विल एंड अप करेक्टिंग 18 to 19 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 20. सो यू हैव टू सी कि आपकी पोटेंशियली आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो. Not because it's not a university exam, you have to score above average in all the subjects. The goal is to score the maximum marks, no matter how you do it. So just to summarize myself, start giving GTs as soon as possible and do review it, do analyze it properly, and no matter what your score is, please do not let it affect your confidence. If you are not getting good score in your final GTs, don't let it affect your confidence or feel depressed or disappointed, because handling the stress is as important as preparation on the exam day. So be confident, give your best shot on the exam day. Wish you all the very best. I hope my video will help you in some way or other. Until then, thank you very much for watching, and like, share and subscribe to my channel.